everybody. So today we are going to begin with the lesson number 5, that is HTML5 form, multimedia and CSS. So let's begin with this lesson. In this lesson we are going to study about the HTML, how to create forms in HTML, adding multimedia and cascading style sheets, that is CSS. So first let's talk about HTML. HTML means hypertext markup language. Is a language which can make web pages on the internet, जिसकी हेल्प से हम वेब पेजेस बना सकते हैं अपने इंटरनेट पे और उसे हम वेब ब्राउजर यूज करके देख भी सकते हैं. We can view them using our web browser. HTML documents are made up of text content. किससे बने हुए होते हैं? टेक्स्ट कंटेंट से, एंड डिस्प्ले करते हैं स्पेशल कोड्स नोन एज टैग्स that tell web browser how to display the content. ये web browser को बताते हैं कि कैसे display करना है content को. In our previous class we have learned about creating, formatting, linking and adding images. हमने क्या पढ़ा था कि कैसे create करते हैं, format करते हैं, link करते हैं, add करते हैं images को tables में and web pages में using HTML5 language. In this chapter we will move ahead and learn about HTML5 like adding forms, multimedia and CSS to web pages. So now let's talk about input control. So an input control is a type of input mechanism on a form. एक input mechanism होता है एक form पे. A form may contain several different types of input control. एक form में different types of input control होते हैं जिसको हम कैसे classify करते हैं? Data text input control से. Data input control can be radio button. Radio buttons होता है, radio checkbox होता है, submit button होता है, reset button होता है and selection menu होता है select करने के लिए. Text इनपुट कंट्रोल अलाउ करता है यूजर को एंटर करने के लिए टेक्स्ट किसके थ्रू? टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू. टेक्स्ट फॉर स्मॉल अमाउंट ऑफ टेक्स्ट. सो एक टेक्स्ट एरिया बॉक्स होता है, टेक्स्ट एरिया लार्ज अमाउंट ऑफ टेक्स्ट के लिए होता है, एंड पासवर्ड टेक्स्ट और अ पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स के लिए एंटर करने के लिए पासवर्ड को. A text control create a text box that is used for a single line of input. ये create करता है text box जिसको single line of input के लिए चाहिए होता है हमें. तो टेक्स्ट कंट्रोल हैज टू एट्रीब्यूट. दो एट्रीब्यूट है, साइज होता है जो डिटरमाइन करता है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो डिस्प्ले होंगे फॉर्म पे, एंड दूसरा क्या होता है? मैक्सिमम लेंथ कितनी होगी जो स्पेसिफाई करता है मैक्सिमम लेंथ ऑफ द इनपुट फील्ड. सो फैक्ट फोल्डर अ पासवर्ड कंट्रोल आल्सो क्रिएट्स अ टेक्स्ट. जो पासवर्ड कंट्रोल होता है टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करता है क्या यूज करके? सिंगल लाइन ऑफ इनपुट को यूज करके एक्सेप्ट दैट कैरेक्टर्स एंटर इनटू द फील्ड एंड कैन अपीयर as asterisk or bullet. A password text box hold the password entered by a visitor. इसमें वो पासवर्ड होता है जो एंटर करता है एक विजिटर. रेडियो कंट्रोल लिमिट्स द वेब पेज. एक रेडियो कंट्रोल क्या करता है? लिमिट करता है वेब पेज विजिटर्स को टू ओनली वन चॉइस फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ चॉइस. Each choice is preceded by, किससे प्रीसीड होती है? रेडियो और ऑप्शन बटन से, which typically appears on a circle. वो टिपिकली कहाँ appear होती है? सर्कल पे. A checkbox control allow करता है वेब पेज विजिटर को सेलेक्ट करने के लिए more than one choice from list of choices. Each choice in a checkbox list can be either on or off. Each choice क्या होगी? On या फिर off. By default all checkboxes are deselected. जो default से क्या होता है? वो सारे checkboxes आपके deselected होते हैं. Select control create करता है सिलेक्शन मेन्यू फ्रॉम विच द विजिटर सेलेक्ट. विजिटर सेलेक्ट करेगा वन या फिर अपनी चॉइसेस की. दिस ये प्रिवेंट करता है विजिटर को हैविंग टू टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, द टेक्स्ट और टेक्स्ट एरिया फील्ड. नाउ टेक्स्ट एरिया कंट्रोल क्रिएट करता है फील्ड्स को जो अलाउ करता है मल्टीपल लाइंस ऑफ इनपुट को. टेक्स्ट एरिया फील्ड्स आर यूजफुल. ये यूजफुल होती है डिटेल इनपुट के लिए जब रिक्वायरमेंट होती है हमें डिटेल इनपुट की डिजायर्ड बाय अ वेब पेज विजिटर. The submit button send करता है information to the appropriate location, जो एक exact location पे for processing. A web page form must include a submit button. एक web page form में एक submit button जरूर होना चाहिए. The reset button clear any input. ये clear करता है input को that we entered in the form. Resetting the input control करता है control back to the default. A web page form must also include a reset button. वेब पेज फॉर्म में एक reset button जरूर included होना चाहिए. Now creating forms. How to create forms? We can use forms to collect information. Forms को use कर सकते हैं collect करने के लिए information from people who visit our website. A form has input field. एक form में क्या होती है? Input field होता है for user to enter information. जैसे user information enter कर सकता है. A limit choices to valid options to avoid incorrect data entry. Forms provided an easy way to collect required information. Easy way provide करता है collect करने के लिए required information को.
3 important parts of the web pages के form tag, form input element, submit button. While designing a form we write HTML. हम क्या लिखते हैं? HTML लिखते हैं डिफाइन करने के डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को जो अलाउ करता है यूजर को टाइप करने के लिए सेलेक्ट इन्फॉर्मेशन, टाइप करने के लिए यूजर को या फिर सेलेक्ट करने के लिए इन्फॉर्मेशन. These objects can include text field, जिसमें text field हो सकता है, रेडियो बटन, चेक बॉक्सेस एंड अदर ऑप्शंस होते हैं. All forms should include a submit button. सारे फॉर्म्स में क्या होना चाहिए? सबमिट बटन जरूर होना चाहिए सेंड करने के लिए डेटा अपने वेब सर्वर पे प्रोसेसिंग के लिए. नाउ सेटिंग अप अ फॉर्म. फॉर्म कैसे सेटअप करते हैं? वी मस्ट सेट अप अ फॉर्म बिफोर एडिंग एनी इन्फॉर्मेशन टू इट. उसमें कोई इन्फॉर्मेशन ऐड करने से पहले सेट करना चाहिए. टू सेट अप अ फॉर्म वी नीड टू स्पेसिफाई टू इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. दो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन स्पेसिफाई करनी चाहिए, मेथड एंड एक्शन प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्म टैग्स. मेथड प्रॉपर्टी टेल्स द इन्फॉर्मेशन, tells the form how to transfer the data. ये फॉर्म को बताता है कि कैसे डेटा को ट्रांसफर करना है to the form processor, जो क्या है, which is a CGI script and other email address. We can assign either of two values of the method property get. If the method property of form is set to get, अगर method property हमारी form की set है get पे, then data in the form is given to the form processor. Data होता है उस form में given होता है form processor में. किस फॉर्म में? एनवायरमेंटल वेरिएबल्स की फॉर्म में, क्वेरी लाइक स्ट्रिंग. इफ नो मेथड प्रॉपर्टी इज गिवन, अगर कोई मेथड प्रॉपर्टी गिवन नहीं है फॉर्म टैग पे, द डिफॉल्ट प्रॉपर्टी इज सेट टू गेट. नाउ पोस्ट. इफ द मेथड प्रॉपर्टी इज फॉर्म, अगर हमारी मेथड प्रॉपर्टी फॉर्म की क्या है, सेट है हमारी पोस्ट पे, the data is of the in the form is given to the form processor. जो डेटा होता है कहाँ गिवन होता है? फॉर्म प्रोसेसर पे as standard input to the program. Now let's talk about action. Property of the form tags tell which action the form should take. कि क्या action form को लेना चाहिए when user presses the submit button. जब user क्या करता है? Press करता है submit button को. Follow these steps to set up the form. अब you have to follow some steps form set करने के लिए. टाइप करना है आपको form method, then is equals to post for the form to appear on the web page. Then press करना है आपको space bar की को. टाइप करना है आपको एक्शन, देन क्वेश्चन मार्क रिप्लेसिंग विद द लोकेशन ऑफ योर सीजीआई स्क्रिप्ट ऑन योर वेब सर्वर दैट विल प्रोसेस द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय योर फॉर्म. या फिर आप क्या कर सकते हो, इफ यू लाइक टू गेट इंफॉर्मेशन टू आवर ईमेल एड्रेस, अगर हमें अपने ईमेल एड्रेस पे चाहिए, टाइप करना है आपको एक्शन, देन मेल टू क्वेश्चन मार्क, जो भी होगी पीओवी मेल होगी, रिप्लेसिंग करना है आपको आवर ईमेल एड्रेस से. If we want to receive the information as text in our email, अगर टेक्स्ट की तरह चाहिए इन्फॉर्मेशन हमें ईमेल पे, देन आपको टाइप करना है end type is equal to text या फिर slash pane in the form type. Then टाइप करना है आपको form to complete the form. Now creating a text box. कैसे create करते हैं text box को? We can create a text box that allow reader to enter a line of text, जिससे reader जो होता है enter कर देगा line of text. Text boxes are used for entering names and addresses. ये किस लिए यूज होता है? एंटर करने के लिए नेम और एड्रेसेस. Follow the steps to create a text box. First, between the form and form text, टाइप करना है आपको टेक्स्ट जो अपीयर होगा beside the text box, then प्रेस करना है आपको स्पेस बार की को. टाइप इनपुट टाइप टेक्स्ट टाइप करना है, then प्रेस करना है आपको स्पेस बार की. टाइप नेम replacing with other word that describe the text box, then you have to press space bar key. Now to define the width of text box, type size type करना, replacing with the width to use for the text box. If we need to define the maximum number of characters, अगर ज़्यादा से ज़्यादा number of characters को define करना है जो visitor enter करता है text box में, you have to type maximum length question mark. आपको टाइप करना है maximum length is equal to question mark replacing with the maximum number of characters. Then type करना greater than is assigned to complete the text box. So the web browser displays a text box. वो web browser जो का display करेगा आपकी text box को. Now let's talk about fact folder. Default text value appear in the text box. Default text जो का value का appear होगी आपकी text box में. When the user views the form, जब जो user होगा view करेगा उस form को, we can use default values to display instructions. हम default value को use कर सकते हैं display करने के लिए instructions about the type of data required, कि किस type का data चाहिए. Gives user an example of the data we are looking for, or
शो पॉपुलर चॉइस, या तो एग्जाम्पल दो कि किस टाइप का डेटा उसको चाहिए, या फिर पॉपुलर चॉइसेस दिखा उसके रिस्पॉन्सेज की. So to specify a default, we can add value attribute to the input tag. For example, input type है text, name, email, value, enter your email address. Now creating a password box. अब password box को कैसे create करते हैं? We can create a password box that allow reader to enter confidential or secret information. जो allow करता है reader को जिससे वो enter कर पाए confidential or secret information, जैसे आपके credit card numbers हो गए, password हो गए. It differ from standard text box. ये किससे differ करता है? Standard text box एक manner में we when a user type in any character and asterisk or bullet, asterisk, star or bullet appear होगा कि हर character की type, हर character पे each character type और screen to prevent other from reading the information. Now follow the steps to create a password. You have to follow some steps to create a password first. Between the form and form tags, type the text. आपको टाइप करना है text जो appear होगा beside the password box and then press space bar की. आपको space bar की press करना है. Type input type password and then press करनी है आपको space bar की. Type names question mark replacing with a word that describe the password box and then press the space bar की. फिर आपको press करनी है space bar की. 1, 2, 3, 4, 5, 6. First step, second, third, fourth, and fifth, sixth. To define width of password box, अगर आपको define करने की कितनी width चाहिए आपको password box की, आपको type करना है size replacing with the width of characters to have. To define the maximum number of characters की कितनी ही maximum number of characters चाहिए that a visitor can enter in password box, type करना आपको maximum length replacing with the maximum number of characters. Type करना आपको complete the text box. The web browser display करेगा आपका password box. When a user type characters in the password box, जब एक user type करता है characters password box में, एक bullet appear होगी, एक और asterisk appear होता है हर character पे, हर password box में on screen. Creating a last text area, बड़े से text area को कैसे create करते हैं? When we can create a last text area that allow visitor to enter several lines of data, जो allow करता है visitor को enter करने के लिए बहुत सारी lines की data को. It generally used for getting commands or feedback from the visitor. किसलिए generally use होता है? commands लेने के लिए, feedbacks लेने के लिए visitor से. Follow the steps to create a last text area. Between the form and form tags, type करना है आपको text to appear beside or above the text area and then press करना है आपको space bar की. टाइप करना है आपको टेक्स्ट एरिया, देन प्रेस करना है आपको स्पेस बार की. देन टाइप करना है आपको नेम रिप्लेसिंग विद अ वर्ड दैट डिस्क्राइब द टेक्स्ट एरिया, देन प्रेस करना है आपको स्पेस बार की. टाइप करना है आपको रोज रिप्लेसिंग विद द हाइट फॉर द टेक्स्ट एरिया, देन प्रेस करनी है आपको स्पेस बार की. टाइप करना है आपको कॉस्ट रिप्लेसिंग विद द विड्थ ऑफ टेक्स्ट एरिया, देन प्रेस करनी है आपको फिर से स्पेस बार की. टाइप रैप. If we have the text visitor type automatically wrapped within the text area. Type text area to complete the text area. टाइप करना है आपको text area complete करने के लिए text area को, and skip करना है step 4. Step 4 skip कर देना है. If we do not want other checkbox to be selected, अगर हम नहीं चाहते कि दूसरा checkbox भी select हो तो हमें अपने 4th step को skip कर देना है. The web browser display कर देगा आपका text area. Now creating checkbox कैसे create करते हैं? We can include checkboxes in a form if we want visitor to select one or more options. While creating checkboxes, we need to specify the following information. में कुछ information specify करनी होती है. What that describe the group of checkboxes by using the name attribute, or what that describe each checkbox by using the value attribute. Text to appear beside each checkbox on the web page. Follow steps to create checkboxes. You have to follow some steps to create the checkbox between form and form tags. टाइप करना है आपको इनपुट टाइप चेकबॉक्स एंड देन प्रेस करना है स्पेस बार की को. टाइप करना है आपको नेम रिप्लेसिंग विद अ वर्ड दैट डिस्क्राइब द ग्रुप ऑफ चेकबॉक्सेस टू क्रिएट एंड देन प्रेस करनी है आपको स्पेस बार की. आफ्टर दैट टू स्पेसिफाई द इंफॉर्मेशन वन चेकबॉक्स, टाइप करना है आपको वैल्यू क्वेश्चन मार्क रिप्लेसिंग क्वेश्चन मार्क विद अ वर्ड दैट डिस्क्राइब द चेकबॉक्स, उस वर्ड से जो डिस्क्राइब करेगा आपके चेकबॉक्स को. टू सेलेक्ट द चेकबॉक्स ऑटोमेटिकली प्रेस करना है आपको स्पेस बार की, देन प्रेस टाइप करना है आपको चेक्ड. टाइप Click then to complete the checkbox, then type the text to appear beside the checkbox on the web page.
Repeat step 1 to 6 for each checkbox to create and skip step 4 to avoid the other checkboxes. Step 4 को skip कर देना अगर आपको avoid करना है other checkboxes. The web browser display करेगा आपके checkboxes को. Creating radio buttons. अब radio buttons को कैसे create करते हैं? We can include radio buttons in a form if we want visitor to select only one of the several options. अगर हम चाहते हैं visitor एक ही option को select करे several options में. While creating a radio button, we need to specify the following information: a word that describe the group of radio buttons. एक word जो describe करेगा group of radio buttons use करके name attribute. A word that describe each radio button, जो एक word describe करता है each radio button use करके value attribute. Text to appear beside each radio button on the web page. Follow the steps to create radio buttons. First, between the form and form tag type करना आपको input type radio and then press करना आपको space bar की. Type करना आपको name replacing with a word that describe the group of radio buttons to create, then press करना आपको space bar की फिर से. To specify the information for one button, one radio button की अगर आपको information specify करनी है, then type करना आपको value is equals to question mark replacing question mark with a word that describe radio button. जो वर्ड डिस्क्राइब करेगा आपके रेडियो बटन को. तो सिलेक्ट द रेडियो बटन ऑटोमेटिकली आपको प्रेस करना आपको स्पेस बार की, देन टाइप करना आपको चेक फिर से टाइप ग्रेटर देन साइन टू कंप्लीट द रेडियो बटन. टाइप करना आपको टेक्स्ट टू अपीयर बिसाइड द रेडियो बटन ऑन द वेब पेज. देन रिपीट करना आपको स्टेप 1 to 6 फॉर ईच रेडियो बटन टू क्रिएट. 1 से 6 तक के स्टेप्स को फिर से रिपीट करना है आपको क्रिएट करने के लिए रेडियो बटन. The web browser displays the radio button. जो वेब ब्राउजर होगा आपके रेडियो बटन को डिस्प्ले कर देगा. When radio buttons have different name attribute, जो रेडियो बटन्स में जब different name attributes होते हैं, जो ब्राउजर होता है treat them as different radio button sets. ब्राउजर आपको different radio button set की तरह ट्रीट करता है. This means the user is able to turn on more than one of them at a time by clicking. Make sure all the radio buttons in a set have the same name. आपको make sure करना है कि जो रेडियो बटन्स होते हैं सब में सेट में सबका सेम नेम होना चाहिए. टू अवॉइड दिस वी कैन यूज चेक एट्रीब्यूट. हम यूज कर सकते हैं चेक एट्रीब्यूट को टू शो वन रेडियो बटन इन द ग्रुप एज सिलेक्टेड बाय डिफॉल्ट. क्रिएटिंग अ सबमिट बटन. सबमिट बटन को कैसे क्रिएट करता है? वी कैन क्रिएट अ सबमिट बटन दैट विजिटर कैन क्लिक टू चेंज सेंड द इंफॉर्मेशन दैट एंटर्ड इन आवर फॉर्म टू आवर वेब सर्वर और आवर ईमेल. So follow the steps to create a submit button. आपको अगर submit button create करना है, you have to follow some steps. Between the form and form tag टाइप करना है आपको input type submit and then press करना है space bar की को. Then टाइप करनी है आपको values equals to question mark replacing with the text that appear on the submit button. The web browser display करेगा आपका submit button when the user click करेगा. जब user click करेगा submit button में the data in the form is processed. जो data होगा उस form में process हो जाएगा and send करेगा destination पे specified in the form tag. Now creating a reset button. reset button को कैसे create करते हैं? We can create a reset button that visitor can click to clear the information they entered in a form. For this, follow some steps. Follow the steps to create a reset button. Between the form text type करना आपको input type reset and then press करना space bar की. Type value replacing with the text to appear on the reset button. Then the web browser display करेगा आपके reset button को when the user जब user click करेगा reset button पे the form जो है आपका reset हो जाएगा अपनी original settings में. Now adding multimedia को कैसे add करते हैं? Multimedia elements can be added into HTML pages, illustrate the product or service or simply or aesthetic purpose. Aesthetic purpose के लिए भी illustrate करने के लिए भी product और service को add करते हैं. We can deliver multimedia files to website visitor in several ways. हम बहुत सारे ways में deliver कर सकते हैं आपके multimedia को. Whenever possible, we use files as large files. Files को हम use करने चाहिए large files a long time. The files large files जो है वो ज़्यादा time लेती है ट्रांसफर करने के लिए. आपको transfer to a computer. HTML5 features include native audio and video support. इसमें क्या होता है? नेटिव ऑडियो एंड वीडियो सपोर्ट होता है विदाउट द नीड ऑफ फ्लैश प्लेयर. द HTML5 ऑडियो एंड वीडियो टैग्स मेक इट सिंपल. वो उसको सिंपल करता है टू ऐड मीडिया टू अ वेबसाइट. वी नीड टू सेट SRC एट्रीब्यूट. हमें क्या सेट करना होता है? SRC एट्रीब्यूट सेट करना होता है टू आइडेंटिफाई द मीडिया सोर्स. मीडिया सोर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए एंड इंक्लूड करता है कंट्रोल्स एट्रीब्यूट सो द यूजर कैन प्ले एंड पॉज द मीडिया. जिससे यूजर प्ले भी कर सकता है पॉज भी कर सकता है मीडिया को. एम्बेडिंग ऑडियो. HTML सपोर्ट्स ऑडियो. HTML सपोर्ट करता है ऑडियो टैग्स को which is used to embed sound content in an HTML document.
फॉलो द स्टेप्स टू एम्बेड ऑडियो. टाइप करना है आपको ऑडियो SRC क्वेश्चन मार्क रिप्लेसिंग विद द लोकेशन और नेम ऑफ द साउंड फाइल. लोकेशन और नेम ऑफ द साउंड फाइल से रिप्लेस करते हैं. प्रेस करना है आपको स्पेस बार की एंड टाइप करना है आपको ऑटो प्ले कंट्रोल्स. Then you have to type audio. The web browser display the music control. जो web browser को display करेगा music control and start the playing audio songs as we have given auto play option. यहाँ पे हमने auto play का option दिया है. In some browser we need to click on play button. कुछ browsers पे हमें click करना होता है play button पे start करने के लिए audio को. Embedding video. HTML supports video tags which is embed to video content in HTML document. Follow the steps to embed video. टाइप करना है आपको वीडियो SRC क्वेश्चन मार्क रिप्लेसिंग विद द लोकेशन. किससे रिप्लेस होता है? लोकेशन से, नेम ऑफ द वीडियो फाइल से रिप्लेस होता है. टाइप करना है आपको विद रिप्लेसिंग विद द विद मेजरमेंट. जो रिप्लेस होता है विद मेजरमेंट से सेट फॉर वीडियो प्लेयर्स. गिव अ स्पेस. आपको स्पेस देना है प्रेसिंग द स्पेस बार की. टाइप करना है आपको हाइट रिप्लेसिंग विद द हाइट मेजरमेंट टू सेट फॉर वीडियो प्लेयर. प्रेस करना है आपको स्पेस बार की एंड टाइप करना है ऑटो प्ले कंट्रोल. देन टाइप करना है आपको वीडियो. The web browser display the video and start playing it as we have given autoplay option. In some browser we need a click. कुछ browsers में हमें क्या चाहिए था? click चाहिए था play button पे to start the video. When we place our mouse pointer, जब हम अपने mouse pointer को उस video पे place करेंगे, control will appear. Video controls appear हो जाएंगे. Now cascading style sheets, that is CSS. In HTML we use tags. हम tags को यूज करते हैं to alter the style of a web page. अपने वेब पेज के स्टाइल को ऑल्टर करने के लिए. Altering the style of individual elements on a web page is an easy web development. ये क्या easy web development technique है to use with large websites. However, it is better to use cascading style sheet. ये better use करना cascading style sheet to change the style of web page element. With CSS we write code. हम code लिखते हैं that allow us to control an element within a single web page or throughout an entire website. For example, changing a heading color in a website that contains multiple pages. इसमें multiple pages होते हैं is much easier. वो easy रहती है to using a CSS instead of changing the individual headings. The audio tag supports the file format WAV, MP3 and OGG. कौन से file format? WAV, MP3 and OGG with the while the video tag supports वीडियो टैग क्या सपोर्ट करता है? MP4, WebM and OGG. Style sheet is used style sheet is usually a text file. क्या होती है? टेक्स्ट फाइल होती है जो सेपरेट करती है, that is separate from our HTML document. It can also be internal हो सकती है, residing within our HTML कोड, हमारे HTML कोड के अंदर हो सकती है, जिसमें क्या होता है? फॉर्मेटिंग कोड जो होते हैं एंड जो कंट्रोल करते हैं वेब पेज के अपीयरेंस को. वी कैन यूज स्टाइल शीट. हम स्टाइल शीट का यूज कर सकते हैं उसकी चेंज करने के लिए लुक ऑफ एनी वेब पेज एलिमेंट, जैसे कि पैराग्राफ लिस्ट, बैकग्राउंड्स एंड मोर. व्हेनेवर वी नीड टू अप्लाई द फॉर्मेटिंग फ्रॉम एन एक्सटर्नल साइट, जब हमें फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी होती है एक्सटर्नल स्टाइल शीट से टू एन HTML डॉक्यूमेंट, हम अटैच करते हैं स्टाइल शीट को टू द पेज यूजिंग बाय लिंक टैग. Style sheet files have a CSS file extension. क्या होता है? CSS फाइल एक्सटेंशन होता है. We can link every page in our website. हम लिंक कर सकते हैं हर पेज को अपनी वेबसाइट से to a single style sheet. Any change made to the style sheet formatting are reflected in HTML document. कहाँ रिफ्लेक्ट होता है? HTML document में जो लिंक्ड होती है जो शीट से. By storing all formatting information, स्टोर करके अपनी साइट फॉर्मेटिंग इंफॉर्मेशन एक प्लेस पे, we can easily update the appearance of web page. हम easily अपडेट कर सकते हैं appearance अपने वेब पेजेस को of our site in one single action. Style sheets are made up of rules. किससे बनी हुई होती है? रूल्स से. And each rule has two distinct parts. दो distinct parts होते हैं रूल में, selector and a declaration. The selector specify the element. Selector specify करता है element को to which we want to apply a style rule. And declaration specify करता है formatting for the selector. For example, the style rule H2 color red. The selector is H2. Selector क्या होता है? H2 होता है and color red is the color red क्या है? Declaration होता है. When applied to a page, this rule will make all levels to heading appear in red. इससे क्या होगा? सारी headings हमारी red में appear हो जाएंगी. Fact folder, a div tag is used for defining our section of our document. एक कुछ section को define करता है हमारे document के. With this tag, we can group a large section of HTML elements together. इस section से हम large element
को एक साथ टैग कर सकते हैं, लास्ट सेक्शन ऑफ HTML एलिमेंट को एक साथ कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं उसको CSS से. The div tag also allows us to define characteristics. ये हमें allow करता है define करने के लिए characteristics for several types of elements at once. For example, the div tag can be used to center headings. किस लिए यूज होता है? सेंटर करने के लिए headings and paragraph at the same time. Inline internal and external style sheet. We can connect an HTML document to an inline internal and external style sheet. Inline style sheet is used to apply a unique style. Use होता है apply करने के लिए unique style to a single HTML element. It uses the style attribute. Use करता है style attribute को of an HTML element. Example: H1 style color green. It sets the text color of H1 element to green. H1 element को एक green में set कर देता है. Internal style sheet exists within an HTML page. हमारे HTML पेज के अंदर एग्जिस्ट करता है between the head and the head tags, while external style sheets are separate files. External style sheets क्या होती है? Separate files होती है. Internal style sheets are useful as we link them to more than one HTML document. ये useful होते हैं जैसे हम लिंक करते हैं इनको एक से ज्यादा HTML document से. Internal style sheet. An internal style sheet is used to define a style. ये किस लिए यूज होती है? डिफाइन करने के लिए स्टाइल फॉर अ सिंगल HTML पेज. We can create an internal style sheet. हमें internal style sheet भी create कर सकते हैं that resides within the head, text or HTML document. The style of an internal style sheet are defined by style and style tags apply only to HTML in that document. Follow the steps to apply style to the web page. On the web page, style between head and head tags to use a style sheet. Type a tag. आपको type करना होता है tag to define characteristics को define करने के लिए we can define characteristics for tags. Tags के लिए कर सकते हैं जैसे such as H1 headings, P for paragraphs and B for bold text. Type करना है bracket में and write करना है आपको characteristics for the tag. Now type bracket close to end the characteristics for the tag. Enter करना है आपको characteristic for the tag between curly brackets. जो कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं इनके बीच में. A semicolon must separate each characteristics. ब्रैकेट्स के बाद सेमीकोलन हर कैरेक्टरिस्टिक्स को सेपरेट करे. रिपीट करना आपको स्टेप 2 to 4 for each tag to define the characteristics for. Then टाइप करना आपको स्टाइल to complete the style sheet. स्टाइल शीट को कंप्लीट करने के लिए. Now fact folder. If we want to display default text in a text area, अगर हमें default text को text area में display करना है and do not want user to move, या हम ना चाहें यूजर को मूव करना और एडिट करना टेक्स्ट को, हम क्या करेंगे? रीड ओनली एट्रीब्यूट को यूज करेंगे. एक्सटर्नल स्टाइल शीट. We can use an external style sheet to define formatting and layout instructions को define करने के लिए and then link it to more than one HTML document. एक से ज्यादा HTML document से लिंक कर देंगे. हम सेव कर सकते हैं स्टाइल शीट को टेक्स्ट फाइल एंड असाइन करेंगे .css फाइल एक्सटेंशन. We can link to a style sheet. हम लिंक कर सकते हैं स्टाइल शीट से to assign a set of formatting rules to HTML document. We can also link multiple documents. हम multiple documents को लिंक भी कर सकते हैं to the same style sheet to give all pages in the site of a consistent look. The link tag is used for linking current document. ये किस लिए यूज होता है? linking current documents के लिए to multiple documents. To do this, you have to follow some steps. Follow the steps to set up a style sheet for multiple web pages. First, you have to create a new document in a text editor. Perform step 2 to 5 for this section of previous page in internal style sheet to set up the information for style sheet. Then click करना आपको file menu पे, then click करना आपको save पे और press Ctrl+S to save as dialog box appear. Then navigate to the folder that contains HTML tag. आपको navigate करना है उस folder में जिसमें क्या होगा? HTML का tag होता है. Type करना है आपको unique file name for the style sheet and .css extension से. In this example, we have given the name of style sheet .css. यहाँ पे example है. then आपको click करना है save button पे. Text editor save करेगा आपको new style sheet में. Create web page from the travel agency. आपको create करना है web page travel agency के लिए including following information: name, comment section, address, service using checkbox control, mobile number, submit and reset button. This is your fetching time. Follow the links steps to add the link to a style sheet. Type करना आपको link
prill dot is equals to style sheet टाइप करना है आपको, type is equals to text और CSS between the head and heads text, then press करना है आपको space bar की, टाइप करना है here href is equals to question mark replacing with the name of location of the style sheet. The web browser displays the style specified for the web page. Indenting text through CSS. An indent is the space between margin and text. Space होता है margin और text के बीच में. The indent feature is often used to set up first line indent. ये किस लिए यूज होता है? सेट करने के first line indent for paragraphs. We can indent the first line. हम indent कर सकते हैं first line of all paragraphs of the text on a web page that uses text indent property in style sheet. Follow the steps to indent text through CSS. To indent the first line, indent करने के लिए first line of all paragraphs of the text that uses specific text position to the cursor between the brackets for the text. Type करना है आपको text indent semicolon and then press करना है आपको space bar की. टाइप करना है आपको amount of space for the indent as a percentage of the window. Example 20%, 30%, जो भी आपकी percentage होती है आपकी window की. In pixels, example 20 pixel, 30 और 30 pixel. The first line of all paragraphs in the text that uses the tag is indented by web browser. किससे indented है? Web browser से indented है. Changing margin through CSS. Margins को कैसे change करते हैं CSS से? Margin is the amount of space that appears around an element. ये amount of space होता है जो appear होता है element के around. It can be set for new web page. New web page इसके लिए set कर सकते हैं elements के लिए with the margin property which can accept 4 values. 4 values होती है हमारे top, right, bottom and left edges. We can include 2 values. हम include कर सकते हैं 2 values as alternate to 4 values. These 2 values set the top, ये top और bottom margins को set करता है to the first value and right and left margins को second values पे. The value can be measured in pixel. Pixels में measured होती है as percentage of the window. Follow the steps to change margins through CSS. First, to change the margins of every element that uses a specific tag position the cursor. Position करना आपको cursor between the brackets for the tag. Type करना आपको margin replacing with the required margin to change left, right, top and bottom and then press करना आपको space bar की. Type करना आपको amount of space for the margins in pixel. Example 40 pixel. Every element that uses the tag with the margin specified in the displays in this specified is displayed in the web browser. Changing margin using div tag. कैसे change करता है margin को div text को use करके? If 3 values are included, the top edge gets the first value. जो top edge होता है उससे first value मिलती है. The left and the right edges get the second value. जो left और right edge होता है उसको second value मिलती है. And bottom gets the third value. Bottom को third value मिलती है. If what value is listed for the margin property, अगर एक value listed है margin property के लिए, the value is applied equally to 4. सारी value apply हो जाएंगी equally 4 edges पे. Follow the steps to change margin using the div tag. Add करना आपको margin style property in div. Set करनी आपको margin property by assigning values to top, right, bottom and left margins. Then type करना आपको div in front of the text to display as a margin. And type करना आपको div after the text to display as a margin. The first paragraph now has margin. जो first paragraph में margins है on each side. So that's all for this lesson. I hope you all like the explanation of this lesson. Thank you and have a good day.